Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following statements regarding mitochondrial membrane is not correct? Option A, the inner membrane is highly convoluted, forming a series of infolding. Option B, the outer membrane resembles a sieve. Option C, the outer membrane is permeable to all kinds of molecules. Option D, the enzymes of electron transfer chain are embedded in outer membrane. Now, the key concept that is applicable here is mitochondria, and specifically we will be talking about the structure of mitochondria. Now, let us understand कि mitochondria है क्या. So, mitochondria जो है वो एक सेल ऑर्गेनल है जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है एंड उसका मेन रोल जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो है इट एक्ट्स एज अ पावर हाउस ऑफ सेल whereby it helps in generating ATP that is a form of energy for the working of cells. Now let us discuss the options. So option A, तो ऑप्शन ए में बोल रहे हैं कि इनर मेम्ब्रेन is highly convoluted and it forms a structure forming a series of infoldings. So अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे so it is something like this where जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है एंड ये जो है उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, whereas इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड है एंड ये जो फोल्डिंग्स है उसको बोला जाता है क्रिस्टे. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फोल्डिंग? सो द पर्पस इज टू इंक्रीज द surface area available for oxidative phosphorylation जिसको हम ETC दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं. सो ये करने के लिए उसकी जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाए. सो दैट इज द रीजन व्हाई इट हैज वेरियस इनफोल्डिंग्स इन द इनर मेम्ब्रेन. देयरफॉर दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ ऑप्शन बी की बात करें. सो ऑप्शन बी में बोल रहे हैं कि आउटर membrane has a structure which is resembling to a sieve because this is also a correct statement because the outer membrane of mitochondria contains pores and they contain porins that forms channels that resembles to a sieve, and they allow the passage of or movement of ions, metabolites and small proteins into the mitochondria. Therefore, this is also a correct statement. Now, so ऑप्शन सी की बात करें. सो ऑप्शन सी में बोल रहे हैं कि आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल मतलब वो अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ molecules inside. So this statement is true because this is outer membrane is permeable to
ions due to the presence of porins, and it is also permeable to metabolites, and it helps in the exchange of these ions and metabolites between the cytosol and mitochondrial matrix. So therefore this is the correct statement. Now ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी में बोल रहे हैं कि जो एंजाइम्स है ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेंज, दैट इज ETC, they are found or they are embedded in the outer membrane. So this statement is not correct because those enzymes of ETC are embedded in the inner membrane and they are not found on the outer membrane. So this is the incorrect statement. So based on the discussion, the following statement regarding mitochondrial membrane that is not correct is the enzymes of the electron transfer chain are embedded in the outer membrane. Therefore, the correct option to this question is option D. Hope you understood it well. Best of luck.